हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में फ्रेंड्स समझेंगे, जो कि इंग्लिश पेडागोजी के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग इज ए की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। ऑल लर्निंग इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ कैन बी आइदर फिजिकल और मेंटल। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड इंडिविजुअल अंडरगोज अ चेंज इन हिज हर नॉलेज एंड बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ लर्निंग. Everyone is different from one another. Is acquiring skills means everyone has different rate or speed of learning. Certain factors such as environment, learners abilities and motivation, teachers capabilities and way of imparting knowledge all impacts a person learning experience. Okay, आगे देखेंगे फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई मेयर, लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सन नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सन नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन फोकस ऑन थ्री थिंग्स. फर्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द चेंज इज लॉन्ग टर्म rather than short term. Second, the point of change is the content and structure of knowledge in memory or the behavior of the learner. Third, the cases of the change is the learner experience in the environment rather than fatigue, motivation or physical condition. अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सूसन एम्ब्रोस, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड टू चेंज विच एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग. सो वी कैन से दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज. आगे देखेंगे फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ लर्निंग क्या होता है. देयर आर थ्री टाइप ऑफ लर्निंग. क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लर्निंग. तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ लर्निंग. फर्स्ट, मोटर लर्निंग. सेकंड, वर्बल लर्निंग. थर्ड, कंसेप्चुअल लर्निंग. मोटर लर्निंग, most of our activities in day-to-day life refer to motor activities, that is walking, running, driving, climbing, etc. or all these activities involve muscular coordination. Okay. Second, verbal learning. Verbal learning, this type of learning involves the language we speak, the communication method we adopt, that is sign, picture, symbol, word, sound, etc. are the tools used in such activities. Third, conceptual learning is in this form of learning we require higher order mental process like thinking, reasoning, intelligence. With the use of these a child learns different concept. Okay, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग. फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग क्या होता है कि सर्टेन फैक्टर अफेक्टेड लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल. दीज फैक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज. फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर. लर्नर मोटिवेशन डिसाइड द स्पीड्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग. इफ द लर्नर इज मोटिवेटेड टू लर्न ही सी लर्न इट मोर इफेक्टिवली एंड परमानेंटली. और सेकेंड है कि अ लर्नर मेंटल कैलिब्रा और एबिलिटीज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग एंड इंटेलिजेंट लर्नर may learn more effective. Third, if a learner is interested in a particular subject, she will be more inclined toward learning it. Okay. अब बात करेंगे फैक्टर रिलेटेड टू दी टीचर्स. इफ अ टीचर इज कंपोनेंट इनफ टू टीच अ सब्जेक्ट द लर्नर विल गेट मोटिवेट टू लर्न. सो रोल ऑफ टीचर एफिशिएंसी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. सेकंड, इफ टीचर हैज़ गुड प्रोनाउंसिएशंस एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, लर्निंग बिकम्स मोर लास्टिंग एंड इफेक्टिव. थर्ड है द बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम आल्सो अफेक्टेड लर्निंग. इफ क्लासरूम आर वेरी क्राउडेड और विदाउट अ प्रॉपर structure, learners will get disturbed and this will affect learning. Non-ability of subject material like textbook or resource books can also impair the learning process. Okay. अब बात करेंगे RT एक्ट क्या होता है. RT एक्ट जो है द राइट ऑफ चिल्ड्रंस और टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन इन एक्ट
इसका राइट टू एजुकेशन इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन acted on 4th August 2009, okay, which describe the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 year in India. The RT Act is the first legislation in the world that puts the responsibility of ensuring involvement, attendance and comprehension of elementary education on the government. This RT Act stipulates that no child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the compulsion of elementary education. It also stipulates that no child shall be subjected to physical punishment or mental harassment. The act wants that learning should be in a manner which is child friendly. Okay, आगे देखेंगे. आगे है फ्रेंड की फैक्टर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट. फॉर लर्निंग कंडक्टिव इन्वायरमेंट इज वेरी एसेंशियल. चिल्ड्रंस आर मोर लाइकली टू लर्न इफेक्टिवली इज एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट. नेचुरल सराउंडिंग सच एज क्लाइमेट्स एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन इफेक्टेड लर्निंग. हाई टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी डिक्रीज मेंटल इफिशियंसी. ओके, अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन. एक्विजिशन क्या है कि व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली and without any systematic practice, it is called acquisition. The terms learning and acquisition are complementary. Okay, learner acquire a language when it is used in their natural environment. आगे देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस एक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव, प्रोड्यूसर एंड यूज वर्ड टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट. दिस कैपेसिटी इन्वॉल्व द पिकिंग अप ऑफ डाइवर्स कैपेसिटी इंक्लूडिंग सिंटेक्स, phonetics and extensive vocabulary. This language might be vocal as with speech or manual as in sign. Okay, language acquisition usually refers to first language acquisition, which studies infant acquisition of their native language, rather than second language acquisition, which deals with the acquisition in both children and adult of additional language. Okay, अब बात करेंगे concept associate with acquisition and learning. The concept or theories of various scholars associate with learning and acquisition are as follows. Jean Piaget concept. Jean Piaget cognitive theory of language learning state that learning start with adaptation. One can achieve that adaptation through assimilation and accommodation. Okay, assimilation and accommodation. Assimilation is the way that a person takes in information and makes sense of it. This can include changing the information to make it fit. Accommodation and assimilation go hand in hand. When one accommodates, he or she is using assimilation to change his or her thought patterns. Okay, आगे देखेंगे Jean Piaget also showed that classification was also important to learn language. Certain words and sound needed to be grouped together to be better understand and use them in speech. But some educationists criticized Piaget theory, that is Soviet psychologist Lev Vygotsky claims that Piaget did not take cultural difference in consideration with his theory of language learning. Okay, or he also said that learning tasks were too much for a child and help was needed to successfully learn a language. Okay, अब बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की. वेरी इंपॉर्टेंट concept. Noam Chomsky believes that children are born with an inherited ability to learn any human language. Noam Chomsky believes that children was born with an inherited abilities to learn any human language. He claims that certain linguistic structure which children use so accurately must be already imprinted on the child mind. Okay, or Chomsky states that every person possesses a language acquisition device. Chomsky states that every person possesses a language acquisition device or LED. Okay, which is a hypothetical tool hardwired into the brain. Children have only to learn new vocabulary and apply the synthetic structure from the language acquisition device to form sentence.
Chomsky point out that children could not possibly learn a language through imitation alone because the language spoken around them is highly irregular. Adults' speech is often broken up and even sometimes ungrammatical. आगे देखेंगे he also state that all children are born with an understanding of the rules of language. They simply need to acquire vocabulary. Critics of Noam Chomsky theory say that although it is clear that children does not learn through imitation alone, this does not prove that they must have LED language learning device या language acquisition device. Language learning could merely be through general learning and understanding ability and interaction with other people. Okay. अब थर्ड है वाइगोस्की कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन. वाइगोस्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन contradictivist learning theory, contradictivist language theory, okay, which contended that children acquire knowledge as a result of engaging in social experience. वाइगोस्की 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं, सोशल, लैंग्वेज एंड कल्चर पे. तो which contain that children acquire knowledge as a result of engaging in social experience through social and language interaction. Older and more experienced member of a community teach a younger members skills, values and knowledge needed to become productive members. Okay. आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम community also plays a central role in the process of making meaning, and learning is a necessary and universal aspect of the process of developing cultural organized especially human psychological function. Okay. आगे देखेंगे in other words, highly mental process in the individual have their origin in social process. He plays more emphasis on the role of language in cognitive development. The language learning process occur as a result of give and take parents and teachers. User a child through a process of guided discovery, addressing his her learning potential. Eventually, children's internalize language skill. Or Vygotsky contravist learning theory exists in opposition to Jean Piaget theory of language acquisition. Thank you, friends.